Hello, 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 everyone. Good morning. How are you doing? Okay. Let's see who all other people who are here. Okay. So it's already 11 o'clock and we're going to start right away. Hi, Ronak. Good morning. Muted. How are you doing? Hello, sir. Good morning. Good morning. Hope you're okay now. Audible? Yeah. Just So good morning, everyone. Good morning, Saketji. Good morning, Ronak. Today we are going to have morning, another sir. Good morning, beautiful everybody. session. Yes, how are you doing? How has been your week? Now it's good. Little bit better this week actually. From I think that Wednesday, Thursday onwards, it was good. Nice. Good. Good in business terms? Health, everything? No, it's good. That's actually I got a delay for this about 1 week for this actually. For each and everything has been delayed. No problem. But still now it is not recovered. The scuff is still there for this. Okay. No problem. So, hello, Krishanji. How are you doing? Welcome once again. Good to see you. So today we are going to have another wonderful session. Again, it's about psychology of pricing. I was, literally thinking of doing something which adds more and more value. See, practical implementation was one part of it, but we should be knowing the theory part as well. So, chota trading, smaller tradings I do only to take care of, the things which are there in the market. So this topic, came in my mind. So I thought, why not to talk about psychology of pricing? Because everywhere we are seeing some kind of a prices, tags, and we do a lot of things. Yes, good morning. So let's, without delaying anything, we'll start upfront and yeah, we'll be definitely needing your active participation. मैं बहुत सोच के लाता हूँ ट्रेनिंग्स को और मुझे लगता है कि छोटी छोटी ट्रेनिंग्स आपको डेफिनेटली वैल्यू करती होंगी. So I'm even excited. I keep thinking a lot. I do research and do read a lot about it before bringing any topic here. So welcome, Mithu. Welcome. Good to see you again here. And today we are going to talk about psychology of pricing to get sales. Actually, the end result is what? To get sales. So what other people are doing, what other branded companies are doing. There are a lot of things which come across us in front of our eyes. हम देखते रहते हैं. We keep on seeing. But we never, relate it to our business. So pricing is one such thing which I wanted to talk about today. So without further delay, let's dive into the power of psychology in pricing, right? So we all know pricing is important, right? We all very much know that we have to be very much, what do you say, aware of what pricing is there around us in whatever things we are doing, right? So what happens is there is a psychology, and why there is a psychology? Because there are humans across the buying and the selling. I always say there are two humans who are getting engaged into a transaction, and that transaction is based on the psychology which is going inside their mind. So what these companies do, they play or they orient your psychology in such a way that you take a decision in their favor, right? So I'll not go and read all the lines. I'm just going to tell you that pricing has a compounding effect and a profound effect on the decision which we take, which is a consumer. Now, let me show you this image. What comes to your mind when you see this kind of an image? 20% off. Anybody wants to share? What image comes to your mind, or what do you think? What do you perceive when you see there is a tag which says 20% off on certain product? What comes to your mind? Anybody wants to share? So we think it is a discount, maybe
Suppose if we want to something in 1,000 rupees, it will come to us in 800 rupees. So we don't have to pay much. So we'll be getting a lesser price. Exactly. बिल्कुल सही कहा आपने. What we perceive is we are getting something at a lower price than the actual value. Am I right? This is what we think. 100 रुपए की चीज है, 80 रुपए में मुझे मिल रही है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है. This Actually, is what we things perceive. allures us actually. Even we are not maybe inclined or ready to purchase the thing, but whenever we see the discount, then automatically our mind taking over that, okay, the discount is there. Can I go for Yeah, that? Shall I go for that? correct, It's allures. correct. Exactly, exactly. So what happens is it influences our behavior, right? This particular diagram is influencing our behavior to buy more. Am I right? So what is it is doing? It is playing with our emotions. It is actually captivating our thought process to understand that this thing is worth more than what we are getting at, right? So it encourages higher spending. आपको जरूरत नहीं भी होता है तो कई बार अरे डिस्काउंट हो रहा है चलो खरीद लेते हैं. We do that because it triggers our emotion. Simple, right? Let's go deep. So there are 5 effective psychological pricing strategies which you might have definitely seen or gone through in your life, but उसको मैं अभी explain करूंगा तो आपको लगेगा कि यार ये relatable है, how it is gonna do, right? So this psychology of pricing, as I said, there are 5 effective psychologies, and this psychologies we have definitely seen in our lives earlier as well, लेकिन हम उसको कई बार we don't relate it to. Now let's understand one by one how this, what all these psychologies are actually. The first is charm pricing. What does it mean, charm pricing? It is also called odd or even pricing, number pricing. बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से कहते हैं. And you see, आप देखते होगे ना, सबसे पहले बहुत साल पहले, if you remember or not, I'm not sure, Bata introduced it, 99 rupees का concept. Long back, Bata introduced 99. Why not 100? Why 99? So that is again a psychological thing which happened. And today also, if you see, you go there and see people are talking about how much? $9.99. They're not talking about $10, right? Why? Why they're not talking about $10? It's hardly 0.01. The difference is hardly $0.01. But they don't talk about, Psychological hook, sir. Psychological hook. Yes, this is a psychological. That is why I'm talking about psychology of pricing. So हमें लगता है 10 नहीं है. It's not 10. Yes, it's not 10. It is less than 10. Because 10 is a double digit number. 9 is a single digit number. And here also there is a psychology which I'll tell you. The left digit, mind it, 9.99. The left digit is something which triggers us saying that this is not 10. This is 9. और वो जो gap है ना 0.99 का वो भूल जाते हैं. Sir, Right? even think on this, that sir, if it 199, our mind is reading is that okay, it is under bracket of 100, not in under near to 200. Although it is just less than 1 rupee of 200 actually. Correct. It is Right. going around 100. Very true. So this charm pricing is again bringing something which is again psychologically affecting your customer to perceive that this is not big. This is not 10. This is not a 2-digit figure. This is not a 3-digit figure. In spite of saying 1,000 rupees, we say 999, right? So same thing. So this is called charm pricing. And this has been introduced long back. Recently, if I give you an example, when iPhone launched this first phone, it was priced at $999, not $1,000. And it did a miracle for them in terms of sales. So big companies keep on doing experiments and they saw that this is working. So this is called charm pricing, which is also called odd or even pricing, depending upon what price you are going to tag, right? So again, mind it, यहाँ पे क्या है, the left figure, that is creating a significant role here. The first figure, 9 or 99, whatever it is, right? पहला figure जो dot के left side में होता है, that is more important, which triggers our psychological behavior to buy more, right? Second point, price anchoring. Price anchoring is, anchoring you might be knowing. What is anchoring in general terms? If anybody can share. Anchor क्या होता है? Anchor, आपने सुना होगा anchor word बहुत बार, but actually anchor होता क्या है?
Literal meaning of anchor is what? Sir, it is to stop the ship in one place, like Exactly. drop that in the into the water. एग्जैक्टली क्या होता है जब शिप चल रहा होता है ना, तो शिप इतना मोमेंटम मास रहता है, इतना मोमेंटम रहता है, उसको रोकने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है, नहीं तो वो शोर को जाके बहुत तेजी से धक्का मारता है। तो वो क्या करते हैं, एक हुक टाइप का होता है, एंड दैट हैज बीन थ्रोन फ्रॉम अ डिस्टेंस कि वहां पे जाके शिप रुक जाए, उसको कहते हैं एंकर। सो एंकर इज व्हाट, अ हुक, काइंड ऑफ अ हुक यू कैन से। So price anchoring is what? Price anchoring जब हम कहते हैं, so we say that there are multiple product priced at different price levels. So we start with a higher price, then we come to affordable price, and then to come to a minimal price. तो क्या होता है ना, कस्टमर को लगता है अच्छा this price is very high for me to afford maybe. The second one is okay, third one is cheaper, so let's go and buy the mid one. तो जब price anchoring हम लोग करते हैं ना, तो मिड वन वाला चीज बहुत ज्यादा काम करता है। सो पीपल आर अवेयर कि यार ये चीज अफोर्डेबल नहीं है, ये चीज अफोर्डेबल है, विच कैन गिव मी अ बेटर आउटकम, सो दे गो फॉर दिस। सो प्राइस एंकरिंग इज वन ऑफ दोस इंपॉर्टेंट थिंग्स इन साइकोलॉजी ऑफ प्राइसिंग। और ये चीज आप ज्यादा देखेंगे कहाँ पे, जब बंडल प्राइसिंग स्ट्रक्चर होता है। मैं इसके एग्जांपल्स भी दूंगा अभी, आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल्स एज वेल, राइट। तो इसमें क्या होता है ना कि जो लोअर प्राइस चीजें होती है वो ज्यादा कस्टमर खरीदता है, क्योंकि उसको लगता है ये तो ज्यादा प्राइस है। सो पर्पसली इट इज बीन शोन कि दिस वन इज ऑफ अ हायर वैल्यू, अभी आप मत करो, या ये आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है। सो आपके लिए अफोर्डेबल ये है, गो फॉर दिस, राइट। ये हम लोग देखेंगे रिटेल स्टोर्स में बहुत ज्यादा होता है। थर्ड इज डिकॉय प्राइसिंग। डिकॉय प्राइसिंग में क्या होता है ना, इसमें तीन चॉइसेस होते हैं प्राइसिंग के। जो थर्ड ऑप्शन होता है वो सबसे कम फीचर वाला होता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा लोगों में बिकता है, बिकॉज इट इज द प्रिफर्ड ऑप्शन बिकॉज ऑफ द वैल्यू। वैल्यू इसमें कम है लेकिन फिर भी लोग ज्यादा खरीदते हैं। सो लेट्स से यदि मैं आपको तीन प्रोडक्ट मैं बताऊं, एंकर प्राइसिंग में मैंने क्या बोला कि एक हाई प्राइस आपने एंकर किया, इसमें क्या हमने तीन ऑप्शन क्रिएट किए डिकॉय प्राइसिंग में। फर्स्ट ऑप्शन लेट्स से 1000 रुपीज, सेकेंड ऑप्शन लेट्स से 700 rupees, third option let's say 300 rupees. So people are driven towards sales because of the lower price. Although the value is definitely going to be less, you're not going to get the value of what you're going to get 1000 rupees, but people are more focused towards buying that because of the decoy pricing psychology, right? The fourth is again creating limited time offers on a product. आपको पता ही है कि ये again it's a psychology की आप देखेंगे अमेजोन पे, आप कोई भी प्रोडक्ट जाइएगा, गो एंड सी वट एवर प्रोडक्ट यू पुट इन द कार्ट, उसमें क्या लिखा आता है, ओनली वन आइटम लेफ्ट। हैव यू सीन दैट? जबकि उनके गोडाउन्स भरे होंगे, बट स्टिल दे शो इट इज अगेन अ साइकोलॉजी दैट यू नीड टू बाय इट, अदरवाइज यू लूज समथिंग। सो यू हैव टू क्रिएट अर्जेंसी इन ऑर्डर टू make the decision right away with your customers, right? And then Panchwa is simplifying pricing structures. You don't have to confuse your customers by, making it complex. Make it simple. Okay, this is the price. So mostly what happens is people show an MRP, then they slash it and they give you an offer price. Today offer price is let's say 80% off. Out of 1000 rupees, you will need to only pay 200 rupees. It becomes very simple to our mind. Yeah, we don't have to pay 1000 rupees. We only need to pay 200 rupees, and that's it. Simple. So these are the 5 basic, effective psychological pricing strategies. Now I'm going to tell you some examples of successful psychological pricing. And then I took it from again internet. I'll tell you कुछ examples मैंने internet से निकाले हैं, which is going to make sense for you. So if you know, I don't know, there was a fashion retailer company, J. Crew, and they started selling at $78 instead of $79.99. Mind it, they went one step ahead because everybody was doing 0.99 or something. So they did it at $78 in spite of doing $79.99. And this definitely helped them add more and more to their sales. And if you see, go to McDonald's, KFC, Pizza Hut, any of those, food joints, especially, वहां पे उनके मेन्यू में आप देखेंगे ये चीजें होती हैं। कैसे होती हैं? आप एक चीज खरीदेंगे, लेट्स से यू आर गोइंग टू बाय अ बर्गर, एक बर्गर आप लेंगे, उसमें उसका प्राइस लेट्स से $49 और 49 rupees, बट इफ यू कंबाइंड विथ फ्रेंच फ्राइज एंड ड्रिंक्स, they'll show it that इसका
individual price is going to be, let's say 150 rupees. Now you're going to get it at 99 rupees. Combo offer. Combo offer. Yes, exactly. So combo offer, again, it is a psychology. लोगों को लगता है यार combo में जाएंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा. So let's go for a combo. अब वो नहीं देखते कि उनको खाना था सिर्फ burger. Now they are spending more money to buy even French fries and cold drink as well. Right? So what is happening is you are spending more because of this tactic or this marketing principle, which is actually working on your decision making. You are going to take a decision. उन्होंने तो ऑफर बना दिया, आप चाहो तो सिंगल भी ले लो, बट वो जरूर सेकंड ऑप्शन दिखाएंगे कि सर यदि आप कॉम्बो लोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा. एंड हम कहते चल ठीक है यार कॉम्बो दे दो. एंड वी डोंट सी दैट वी आर स्पेंडिंग मोर मनी व्हिच वाज नॉट रिक्वायर्ड. हमने सोचा नहीं था कि हमें वो भी खाना है, बट हम खाते थे. राइट? सो दिस इज हाउ योर सेल्स इंक्रीजेस. राइट? Now, there are other parameters which I'm going to talk about. The role of emotional trigger in consumer behavior. Let's say clothing stores पे आप देखेंगे ना, कुछ exclusive items होते हैं, right? Clothing store या किसी भी store पे, मैंने एक example दिया clothing store का, and if you say this is an exclusive item which is there only for मेरे पास एक ही piece बचा है sir या जो भी है, दुकानदार है ना, sales people talk about that. So this is very exclusive. यहाँ से मंगाया हमने या यहाँ बनाया है. And if you know, this is only one piece which is left. So we feel like missing out on something very special, which we need to be having, right? Again, this is a psychology which triggers FOMO, fear of missing out, and we do sales. Now let's talk about something more. The perception and value, perception of value and price sensitivity. क्या होता है? आप देखेंगे Walmart या किसी भी बड़े स्टोर्स में जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, आप देखेंगे उसमें क्या होता है कि वहां भी इस तरह की चीजें होती हैं वेयर पीपल आर टारगेटेड टुवर्ड्स बिकॉज दे आर नॉट सेलिंग ब्रांड्स. वो क्या करते हैं? पैकेजिंग करते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को पैकेज इस तरीके से करते हैं. आपको लगता है अरे यार, लेट्स से दे क्रिएट अ पैकेज ऑफ वन शैम्पू, वन सोप, वन लोशन, एंड दे से दैट इंडिविजुअली यू बाय दिस मच, इट विल कॉस्ट दिस मच, बट इफ यू बाय एज अ पैकेज, बिकॉज दीज आर नॉट ब्रांडेड थिंग्स. वहां पे कोई ब्रांड नहीं देखता, वहां पे लोग वैल्यू देखते हैं. यार मेरे को एक शैम्पू भी मिल रहा है, एक साबुन भी मिल रहा है, एक लोशन भी मिल रहा है, तो यदि मैं ब्रांडेड में जाऊं तो एक ही चीज का इतना पैसा लगेगा. हियर व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 3 things at price of 1 kind of. So यहाँ पे वैल्यू और प्राइस सेंसिटिविटी काम करती है. राइट? हैव यू सीन इन बिगर, यू नो, व्हेन बिग बाजार तो अभी बंद हो गया, बिग बाजार भी वैसे ही करता था, या जितने भी इस तरह के जो रिटेल स्टोर्स हैं, जो कि बड़े रिटेल स्टोर्स, आई वुड से वॉलमार्ट इज वन ऑफ दोज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. वॉलमार्ट का एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स. राइट? नाउ अगेन सम सोशल नॉर्म्स एंड कॉन्टेक्स्ट. लेट्स से यू आर गोइंग टू अ, एग्जांपल मैंने दिया है, यू आर गोइंग टू अ बिग रेस्टोरेंट, राइट? और वहां पे आप अलग से बॉटल ऑफ वाइन खरीदिएगा, राइट? तो आपको ज्यादा पैसा लगेगा. बट इफ यू आर गोइंग टू, यू नो, हैव लंच और डिनर, and then if they serve a bottle of wine, so that social norm that I'm drinking wine along with my lunch or dinner, that adds more value and more context to the buyer. Again, this is a psychological fact. यहाँ पे social norms आता है, वो देखेंगे कि यार अगल बगल सारे टेबल पे लोग पी रहे हैं, तो या कोई नया डिश एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो we also tend to do that. Right? Now, impact of anchoring and framing. अगेन मैंने आपको बोला कि कोई प्रोडक्ट जो प्राइस है लेट्स से $100, $100 में, इट माइट सीम एक्सपेंसिव अनलेस एंड अंटिल यू सी दैट देयर इज समथिंग मोर एक्सपेंसिव दैट दैट. वो कहते हैं ना कि एक लाइन को छोटी दिखाने के लिए हमें एक बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है. दिस इज द सेम थिंग. फ्रेमिंग इज अबाउट you show something which is at a higher price, then you show that I have a lower price than this. Then it appears to be like you're doing a bargain on yourself. तो अपने आप माइंड में बार्गेन होता है, यार 150 की जगह मेरे को 100 में चीजें मिल रही है. राइट? सो दिस इज कॉल्ड एंकरिंग एंड फ्रेमिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बंडलिंग, टियरिंग एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग टेक्निक्स. 3 टेक्निक्स है. अब अपने प्रोडक्ट को आपको कैसे करना है, which no most of the people do. Let's talk about that. So पहला चीज है बंडलिंग. बंडलिंग means what? When you are offering 2 or more products together at a lower price. जो मैंने एग्जांपल भी दिया कि आप कॉम्बो ऑफर जो लेते हैं, it works well for complementary products as well, right?
डे टू डे एक्टिविटी में जो हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट लेते हैं, जो हम खाते पीते हैं, सब चीजों में बंडलिंग का इफेक्ट होता है कि एक चीज आप खरीदिएगा तो ज्यादा प्राइस पड़ेगा, बट इफ यू कंबाइन इट विद 2 और 3 प्रोडक्ट्स तो आपका जो वैल्यू होगा वो टोटल वैल्यू से कम होगा. So this is called bundling, right? Is it okay? Am I going fast or it's okay? Okay, ठीक है. Second is tiered pricing. Tiered pricing means this is offering different packages at various points where each of the package includes additional features or benefits, right? और सब में डिस्काउंट रहेगा. Let's say मैंने आपको बोला कि now I have 3 different package. एक में मैंने डाल दिया what? A branded shampoo, a branded lotion, a branded anything else related to that. एक में मैंने उसका एक मिड रेंज का ब्रांड डाल दिया, एक का मैंने लो रेंज का ब्रांड डाल दिया. Now all these 3 packages have similar things. Brands का फर्क है, प्राइस का फर्क है. So what happens is we tend to buy any of this because of the value and the packaging. If somebody is a brand conscious, they'll be buy a branded वाला जो पैकेज है वो tiered रहेगा, वो खरीदेगा. If somebody is not very much conscious about brand, they can go for the middle one or the lower one, but they'll be going for a package, definitely for sure, right? और जो तीसरा होता है which is value based pricing, especially यहाँ पे जो हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं and whatever we talk about online coaching business and business, this is a unique offer which is going to give you a value based pricing. This is not going to give you a generalized packages. This is exclusive again for the target audience with which we are going to work, right? So this is how you are going to do it. Sorry. Right? So value-based pricing is more, requires extensive market research to determine what your customer is looking for. So especially in terms of coaching or the businesses which we are doing, यहाँ पे value-based pricing होती है, right? So these are few of the things. Now let's choose the best pricing strategy for your business. How are you going to choose your best pricing strategy? आप कैसे करना चाहते हो? So let's work in that way. So first of all, you have to understand who your ideal target audience is. Let's say if your ideal target audience doesn't have the paying capacity, so is it going to pay you? No. So again, for you to understand who is your right audience, to price your product, you need to understand who your right audience is and what is their paying capacity. If you want this, I always give an example of, buying a Maruti versus a Mercedes. If you are trying to sell a Mercedes to a Maruti owner or a person who can afford Maruti car, 5 lakhs, 6 lakhs, 8 lakhs, they are not going to be customers for Mercedes, am I right? So you should be knowing who your ideal customer is. तो आप अपने मर्सिडीज वाले के लिए कुछ डिस्काउंट देते हो या कुछ उस तरह का बनाते हो तो उनके लिए मैटर करता है. मारुति वाले को आप बोलिएगा कि 30 लाख में, सपोज कीजिए 30 लाख में मैं आपको 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, उसके लिए 29 lakhs is also not achievable. For example, I'm just giving an example. But for a person who can afford 30-35 lakhs, उसको आप बोलेंगे 1 लाख, तो उसके लिए थोड़ा बोलता है चल यार 1 लाख रुपए तो कम किया इसने. That is how you need to understand your ideal customer. Then you need to establish pricing objectives. What is the objective of your price? Are you want to maximize your profits or you want to increase your market share? Now you need to understand आपका जो pricing है उसमें whether the objective is to increase the profits or getting more market coverage. Depending on that, you need to price your product. Third is comparing different pricing strategies. Now you need to consider the advantages and disadvantages of each pricing strategies and see what is aligning in your business, right? आपके बिजनेस में कौन सा प्राइस काम कर रहा है, that you need to take care of. आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई भी प्राइस उठा के डाल दिया और उसके ऊपर कम करने लगे. You need to do some research and take care of your business in terms of having an effective pricing strategy. Then setting the right price point, again after research and hit and trials or maybe going to the market, you understand यार ये प्राइसिंग मेरे कस्टमर के हिसाब से सही बैठ रही है, या आपने कोई, जैसे मैंने आपको ये बताया था, दिस वन value based pricing. Value based pricing is very unique. You don't have to compete with anyone. If you know that you are going to add a lot of value to your customer, you can have a unique price which can be a very high price as well, depending upon what value you're going to give. So again, here you have to understand and see
what is the rise point, and you have to test and experiment with different pricing. आपको देखना पड़ेगा कौन सा pricing आपके कौन से product के लिए suit करता है. Right? You need to understand what price is suiting you for your particular product. Right? That's it. Simple. So this is how you need to price your product. Is it okay? So what I covered is, just recapping it, we understood how this psychology of pricing plays a major role in terms of selling and getting more sales, number one. What is the mind and what are the effective psychological pricing strategies? We covered charm pricing, price anchoring, decoy pricing, exclusivity and urgency tactics, and simplifying pricing structures. And we also understood some of the successful psychological pricing by some examples like Apple, McDonald's, Pizza Hut, and other things. We also talked about the value and price sensitivity, social norms, anchoring and framing. And we also learned about 3 kinds of pricing techniques, which was bundling, tiering, and value-based pricing. Bundling, tiering, and value-based. And lastly, we understood how we are going to put a price to our services or products. Right? So these were the things which I covered. Now I'm open for any questions if you want. Tell me. Wonderful session, sir. It is a very unique one. Thank you I so have much. I have never seen that no one, anybody has, shared this kind of views in a kind of training or this. We all knew some kind of things in bits and pieces, but in accumulating in a single one, there's a very one. So one more question about that. Yeah. What I thought in this way. Suppose there is a product. Yeah. Within a mall, we are roaming. Mhm. And you are roaming, I am roaming, and all those things. There is a product. Mhm. The product itself is a good. One store is having the good product. I know, you know that it's a good product. And just very similar from another brand, just opposite to the store. But that product is less good in terms of quality on something. But the Right. prices of that particular, the good product is obviously much higher, and the Mhm. less one, and the lesser quality having the less price. So Right. in that scenarios, actually, what actually hooks? Because I have seen the different behavior of the people. Some So, people goes on, okay, this is much cheaper. Okay, I'll go to. अरे quality को कौन देखता है यार? अभी 2 साल ही तो चलेगा. Just like this. And some right. people goes on and a good quality. Oh no, this is a good brand. I have used it in good quality. So how we can differentiate on this and how you can distinguish? Any ideas about that? Yes, exactly. See, it depends upon what kind of a person you are. Are you a quality Yes. conscious person or are you a price sensitive person? Right. Product is there. More or less, it will solve your purpose. Let's say if I go to, let's say if I want to buy a shoe, I bought a woodland shoe. That woodland shoe is running. It's been 7 years. कुछ खराब नहीं हुआ उसमें. I bought a woodland jacket, I think 10 years back. It's a pure leather, I would say. वो आज तक वैसा ही है. Right. So I'm a brand conscious person. So I invest more money in a branded product because I'm quality conscious. मुझे हर साल जूता नहीं खरीदना. Let's say, for example, and now we have grown up, अब हमारे पैर का size भी नहीं पड़ रहा. So I want to invest in something which is really going to give me better quality things. मैं थकता नहीं हूँ उसमें. Although it's a very heavy shoe, but it gives me that kind of a comfort which I want. So I prefer quality. And if I prefer quality, I'll go with that. Similarly, I had to buy ACs for my office. I bought the costliest one. Daikin का मैंने खरीदा. सबसे महंगा था because it was for my own use. हम घर में भी कुछ लगाते हैं तो we try to use the best of the things. This best quality thing should be there in. So it depends upon number one, your how you perceive the quality. Now there are 2 people, as you said. It depends on the individual. लोग लगते हैं यार सब तो ब्रांड भी ऑलमोस्ट बराबर है. Daikin is also equal to Panasonic. तो मैं Panasonic थोड़ा सस्ता ले लेता हूँ. It's your choice. But long term में you need to have a feeling that if you invested or if you saved that money. Now it's been more than 10 years. I bought my office. I put my AC. There is no trouble. Normal servicing. Every year I do a normal servicing and it goes on. No. So now I see that the money which I have invested was worth.
Similarly, if I have to buy a watch, let's say recently I bought a Titan watch, 10-11 हजार रुपए का कुछ था, बट मुझे बहुत पसंद आया एंड आई सॉ द फीचर्स वर रियली गुड. मेरे को 5,000 में टाइटन का भी मिल रहा था. तो डिपेंड करता है कि आपका बजट और आपकी सोच दोनों कहाँ पे जाके जेल करती है, देन यू टेक अ डिसीजन. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट इन इट. अगेन, फॉर द पीपल हु आर सेलिंग, दे विल क्रिएट मल्टीपल लेवल्स. जैसे मैंने आपको बोला, आपको 5,000 की भी चीज मिलेगी, 10,000 की भी मिलेगी, 25 की भी मिलेगी. नाउ यू नीड टू अट्रैक्ट व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू वांट. 5,000 वाले ज्यादा आ रहे हैं आपके पास में. लेट्स से कोई मॉल में जाके घड़ी खरीदेगा तो 1,000 रुपए की घड़ी वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा. तो कस्टमर, the shopkeepers or the brand which are selling, they know that people who are coming in a mall and they're willing to buy a watch, they definitely will be willing to invest at least 5,000 rupees, 10,000 rupees, 15,000 rupees. So they create a range, and out of that range, now you need to change, select which one is best fitted for you. Right. Baki, when you use the product only, you will be able to know what is the thing. Right. And now my sirs, in relation with that, my second question will be how it can be the influential during the costing and the pricing of our courses, and how we can distinguish the different slots or different segments of buyers or users or the candidates. Exactly. Let's say if you are going to, I'm into high ticket, high ticket is, again, not everybody is going to afford the high ticket pricing. Right. That is for sure. So Sure. I need to be very focused on the, जो मैंने आपको बताया कि exclusivity, what services or what outcome I'm gonna give. Right. So my focus would be personalized outcome to the people, and that is where I can charge more money. If Right. I want to go to, masses, then I'll have to create certain product which is not that valuable, but okay, mid-range valuable and mid-range price. That kind of a thing we have to think so that we can take a decision so that our product, whoever we are targeting. Now the targeting differentiates. If you're Yes. going to into mass market, आपका target और price अलग हो जाएगा, product अलग हो जाएगा. Yes, obviously. And if you're going to have an exclusive market, आपका target audience अलग हो जाएगा, pricing अलग हो जाएगा, आपका outcome अलग हो जाएगा. So you need to decide which segment you want to go with, and then you need to price accordingly. And again, to do that also, you need to do some hit and trials, experiment. You need to verify and validate. Let's say if I say that my price is, let's say 5 lakh rupees. Now I need to see if there are people who are willing to spend 5 lakh rupees in my program or not. I'll have to do a beta testing for that. And if there are 4 or 5 people taking it and saying, okay, this is worth this much, then I go with, more speed to make it better and better. Right? Thank you so much, sir. Thank you so much. More clarity. Welcome, Sekheji. Welcome. Hello, Krishanji. If you have any questions, please do ask. Good morning, sir. Good morning. Tell me. सर मेरा इसको प्राइसिंग को लेकर ये है कि मान के चल हमें जैसे आपने बताया कि ये ऑडियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो हमें तो फिर उसको लो रखना चाहिए कि मतलब हाई रखना चाहिए अपने टिकट साइज है. आपका ऑडियंस कैसा है, आप उनको क्या आउटकम देना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. आपका प्रोडक्ट क्या आउटकम दे रहा है. यदि जनरलाइज प्रोडक्ट बनाएंगे तो जनरलाइज प्राइसिंग रखनी पड़ेगी. एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाएंगे, एक्सक्लूसिव प्राइसिंग रखनी पड़ेगी. और बहुत ही लो जैसे कहते हैं ना, लो हैंगिंग टाइप का कुछ बनाना चाहते हैं कि आप बोलो जी आ जाओ 500 रुपए में कुछ ले जाओ, तो 500 रुपए में जो मिलता है वही मिलेगा. राइट. तो उसके हिसाब से आपकी टारगेटिंग भी चेंज हो जाती है, आपका प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है, आपकी प्राइसिंग भी चेंज हो जाती है. तीनों चीजें बदल जाएंगी. यानी वैल्यू बेस्ड रहेगा प्राइस जो रहेगा. हाँ, ऑब्वियसली क्या वैल्यू उस चीज की है उसी के हिसाब से मार्केट भी तो आपको प्राइस देगा. आप मार्केट भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि 500 रुपए में आप उनकी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव ला दोगे. राइट. लेकिन यदि कोई 5 लाख रुपए स्पेंड करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाओगे. बिल्कुल. है ना. तो अगेन इट इज अ वैल्यू बेस्ड आउटकम एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. बट टारगेटिंग अलग हो जाती है इन सब चीजों के लिए. ऑडियंस टारगेटिंग डिफरेंशिएट्स, वो सेम नहीं रहेगा. क्योंकि जिन लोगों को ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस है, जैसे मैं बताऊं, आप जाइए चाय तो टपरी पे भी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल ठेले पे भी मिलती है, लोग चाय में भी जाके 200 रुपए की चाय पीते हैं. राइट. उनको पता है कि मेरा जो कस्टमर आएगा वो मोल भाव नहीं करेगा, ये नहीं बोलेगा यार 200 रुपए की चाय तुम क्यों बेच रहे हो. राइट. बिकॉज दे नो दे आर गिविंग हैप्पीनेस, दे आर गिविंग
good quality seats and AC and other things, एक अच्छा meals दे रहे हैं, so they're charging for that and people are paying. They know their audience. और जो ठेले वाला है उसको भी पता मेरा ऑडियंस आएगा तो यहाँ पे बेंच लगा दूंगा, बैठेगा वहां चाय देगा, उसको 10 की भी चाय चलेगी, राइट? तो ऐसा है. सो इट्स ऑल अबाउट द वैल्यू व्हिच यू आर गोइंग टू गिव. यानी जो प्राइस है वो ऑडियंस पे भी ज्यादा मैटर करता है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है. प्राइस ऑडियंस पे ही डिपेंड करता है. आपका ऑडियंस के पास पैसा नहीं रहेगा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, आपका ऑडियंस यदि मारुति कार की हैसियत रखता है, लेट्स से उनके पास बजट 10 लाख रुपए ही है, तो वो मर्सिडीज के शोरूम में कभी जाएंगे नहीं जब तक उनके पास 30 लाख रुपए नहीं होगा. नहीं जाएगा. नाउ मारुति वाले को उसके हिसाब से उनको बताना है कि इट्स अ फैमिली कार एंड इसमें ये फीचर है, ये बेनिफिट है, इसका एवरेज ये है. आपने कभी सुना मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के एड में देखा है कि इसका माइलेज इतना है? Nobody talks about that mileage because people are already aware कि इसकी mileage कम होगी and they're not bothered about the mileage. They want premium feeling. But the Maruti वाला audience वो पहले पूछता है यार mileage कितना देती है कार, 20-25 क्या देती है, राइट? होता है, पूछते हैं हम लोग. तो यही चीज है. So the pricing is a subject of your audience and your product. दोनों चीजें. सर कि एक चीज सर और भी मेरे ख्याल से यहाँ पे मैटर करती है, वो है पोजीशनिंग. हम अपने कोर्स की पोजीशनिंग किस तरीके से करते हैं. जैसे आपने मारुति की एग्जांपल दी या मान लो मर्सिडीज की दी, तो उन दोनों ने क्या किया, खुद को अलग अलग पोजीशनिंग में रखा है. एग्जैक्टली. एक ने मान लो अपने बजट फ्रेंडली रख दिया, मान लो कम बजट है तो आप इधर आ सकते हैं. दूसरे ने खुद को प्रीमियम दिखाया हुआ है. राइट. पोजीशनिंग तो है ही. आप अपने आप को कहाँ पोजीशन करें, तभी तो कह रहा हूँ ना, मैंने अपने आप को पोजीशन किया हाई टिकट कोच की तरह. मैं लो टिकट में अभी आया ही नहीं हूँ. यदि मैं आऊंगा तो फिर उसके लिए मेरे को बहुत तरह की मार्केटिंग एक्टिविटी पहले करनी पड़ेगी टू कम टू दैट लेवल ऑफ सर्विंग अदर पीपल, राइट? तो पोजीशनिंग बहुत जरूरी है. इसी वजह से मैंने हमेशा आपको एग्जांपल भी दिया है कि मारुति बीइंग अ 30-year-old कंपनी नाउ, मोर देन 30 years, वो अपने आप को प्रीमियम सेगमेंट में पोजीशन भी करना चाहते तो नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने एरिना लॉन्च किया, उन्होंने नेक्सा लॉन्च किया, जस्ट टू पोजीशन देमसेल्फ एज अ प्रीमियम सेगमेंट कार मैन्युफैक्चरर, बट पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट. लोगों ने इतने साल से उसको एवरेज अफोर्डेबल कार के रेंज में रखा है. सो दे आर नॉट एबल टू डू. सो पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बिल्कुल सही कहा. इसीलिए मैं कहता हूँ यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ एज अ, लाइक आई पोजीशन माई सेल्फ एज अ कोच हु वर्क्स विद प्रीमियम कस्टमर्स, राइट? मुझे पता है कि मेरी प्राइसिंग इंडियन मार्केट के हिसाब से प्रीमियम प्राइसिंग में आती है, right? So I'm not going to attract those people who are not ready to invest that kind of a money. तो वो ट्रस्ट मुझे उस तरह से बिल्ड करना पड़ेगा so that people come and pay me that kind of a money if they definitely want to work with me. उतना ट्रस्ट बनते बनते बनता है, फिर लोग इन्वेस्ट करते हैं. And there are people who are charging a lot of money, even more than me. I paid a lot of money to my coach, even double, triple the money which I'm talking about. They have gained that kind of a trust in the market. उन्होंने वो चार्ज किया. और ऐसे बहुत सारे कोचेस हैं, दे आर चार्जिंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी डिपेंडिंग अबाउट व्हाट वैल्यू दे आर क्रिएटिंग फॉर देयर ऑडियंस. तो पोजीशनिंग तो है. पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल सही बात आपने बोली. यस. डिड आई आंसर योर क्वेश्चन किशन जी? यस सर, थैंक यू सर. वेलकम. मीटू, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सकत जी. सर नहीं एक शेयर कर रहा हूँ एक केस स्टडी. आपने वो गाड़ी के लिए बोला ना, कुछ दिन पहले मैंने एक जगह पे बोला था. अभी हाल ही में हम लोगों ने सभी ने देखा होगा से नाउ टाटा मोटर्स इज एक नया कार ला रहे हैं इन प्लेस ऑफ दिस पैरेलल टू हैरियर. दिस इज एन अनवी समथिंग, राइट? सो वहाँ पे कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का एक वहाँ पे एनालिसिस आ रहा था लिंक्डइन में. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ऑन दैट. That it took Tata Motors almost around 20 years to put that the Harrier and such above this segmentation car put and to pick up the in their mind that okay, Tata Motors can have this segmentation this car of this kind of segment apart from their Range Rover range. Right. And they have already they have some kind of comparison. You might have seen that there's a Mahindra launched this XUV X700, right? It was a very premium quality car, right? And the premium priced also. But initial demand was so high for the first 1 or 2 years.
But after that, there was not a single booking for the last 6 months. Can you imagine? Mhm. Because people cannot digest this concept. This Mahindra car is being costing about 30 lakhs. Mhm. So this kind of thinkology actually happens in the mind. So this is very difficult to to build the trust, as you just said rightly. Actually, yes, I'm scary. ट्रस्ट एंड पोजिशनिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट Yes, चीजें हैं किसी भी प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग के लिए. yes, sir. And if I talk about car industry, actually I did some research papers on that. Hyundai is one company which has positioned itself in such a way that वो लो सेगमेंट में भी आता है और हाई सेगमेंट में भी आता है. Yeah, आप Hyundai को Tucson आप is देख very सकते much hot selling cars. Yes. So Hyundai का मतलब there was a chart which we were working together on a project जिसमें Hyundai was positioned in such a beautiful way. उन्होंने अपनी मार्केटिंग इतनी अच्छी करी है कि लो सेगमेंट वाले भी Hyundai अफोर्ड कर सकते हैं और हाई सेगमेंट वाले भी Hyundai करके खुश रहते हैं कि यार दिस इज अ प्रीमियम सेगमेंट कार. सो दे हैव पोजीशनड इट द बेस्ट वे. बाकी जो हाई है वो हाई है, जो लो है लो है. Hyundai ने अपने आप को बहुत बड़ा रेंज दे दिया है, इतनी अच्छी पोजीशनिंग करी है. That is a beautiful way of marketing their product. Nice. Yes, मिठू आप कुछ पूछ रहे थे उसमें. नहीं, मैं भी यही एक्चुअली दैट हमें वो एक तो ब्रांड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. अगर हमें यही सोचना है कि नहीं, अगर हमें हाई ब्रांड में ही करना है तो अभी जैसे आप बोल रहे थे ना सर कि मतलब अगर कोई लो वाले जैसे नैनो आज बहुत बड़ा निकालता है, जैसे वो महिंद्रा सर बोल रहे थे वो कि महिंद्रा का अगर निकला है तो पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट. तो सेम वे जब कोई बड़ा ब्रांड वाला भी कोई छोटा चीज निकालता है तो पीपल आर थिंकिंग व्हाई लॉट ऑफ कंफ्यूजन और लॉट ऑफ डाउट विल स्टार्ट. सो इसलिए वो बड़े जितने ब्रांड हो जाते हैं दे ऑलवेज थिंक इन सच अ वे कि वी विल ऑलवेज, हम कस्टमर को ट्रस्ट और वैल्यू बनाए रखने के लिए हमें वैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में कंटिन्यूसली लाना पड़ेगा. तो हम जब अपनी प्रोडक्ट प्राइसिंग करेंगे तो हमें भी बहुत तरीके से सोच के कि क्योंकि एक बार जब बन जाता है, हमारी इमेज बन जाती है मार्केट में, सो पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग अस इन दैट वे. So we have to be very careful once we are making our offer stack, whatever the product pricing. तो हमें उस तरह से ये, और आपने जो आज का जो ये बताया मतलब how we can make it, तो ये बहुत ही मतलब इसके लिए मतलब ये it will actually will help us a lot once we'll make our the product pricing. तो बहुत अच्छा था सेशन. मैं आपके लिए एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लीजिए इफ यू वांट टू हेल्प पीपल डूइंग फाइनेंशियल्स, राइट, और आपको पता है कि नाउ देयर कुड बी टू काइंड्स ऑफ पीपल, वन हु आर फाइनेंशियली कैपेबल बट दे वांट टू ग्रो देयर मनी. दो तरह के होते हैं, एक जिनके पास नहीं है वो पैसा बनाना चाहते हैं, दूसरा वो जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं फर्दर. दोनों के लिए आपके प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे, दोनों के लिए प्राइसिंग अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि एक के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, दूसरे के पास अफोर्डेबिलिटी है. तो आपके पास दो प्रोडक्ट होंगे. Yes. तो उसके हिसाब से यू कैन चार्ज देम अकॉर्डिंगली. या तो वही बंडल प्राइसिंग वाली मेरे में ज्यादा आएगी, क्योंकि बिकॉज वो लो और हाई दोनों मेरा के मिक्स करके करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव दैट टू काइंड ऑफ क्लाइंट्स आई बी हैविंग. सो इस हिसाब से तो आपको अपना बंडल बनाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा दिस इज मेरा प्रोडक्ट 1, दिस इज मेरा प्रोडक्ट 2. नाउ आई एम कंबाइनिंग बोथ द टू प्रोडक्ट्स एंड आई एम गिविंग एट दिस प्राइस. नाउ यू टेल मी व्हाट डू यू वांट, ऐसे करके. सो अगेन बंडलिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू. गुड. हेलो व्हाट एल्स? यस क्वेश्चन जी. सर, मेरा एक और क्वेश्चन था यहाँ पे. मैडम की बात से मुझे थोड़ा क्वेश्चन आया माइंड में. हाँ. जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है वो सर्विस एंड ट्रेनिंग प्लस है, मतलब दोनों कंबाइंड है. क्या मुझे मान लो दोनों चीजों को प्रोडक्ट वाइज अलग अलग भी रखना चाहिए? मान लो किसी को सिर्फ ट्रेनिंग की जरूरत है उसको ट्रेनिंग भी दे दी जाए, या किसी को टूल की जरूरत है उसको टूल प्रोवाइड करा दी जाए? बिल्कुल, आपका सर्विस बेस्ड है और इसमें दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं. ट्रेनिंग अलग हो गया और सर्विसेज अलग हो गए, राइट. तो आपको रखना चाहिए. नहीं, मेरा जो मेन प्रोडक्ट है सर उसमें ट्रेनिंग और क्या नाम है हमारा सिस्टम दोनों कंबाइंड है, मान लो इकट्ठे हैं. क्या मुझे छोटे प्राइस के अंदर इनको अलग अलग भी करना चाहिए? मान लो किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग दे दी जाए, जहाँ टूल की जरूरत है तो उसको टूल ही प्रोवाइड कराया जाए. देखिए ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है एक्चुअली. आप क्या करना चाहते हैं? दी आप लो प्राइस में जाना चाहते हैं तब आप इसको सेगमेंट कर सकते हैं कि चलो सेपरेट करके. अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको फिर से कार का एग्जांपल देता हूँ. कार में क्या होता है, अब कोई कहे कि मैं कार तो बेच रहा हूँ, इज इट नेसेसरी टू बाई इंश्योरेंस फ्रॉम द सेम कंपनी और द सेम डीलरशिप? दैट कुड बी वन. वो
मैंडेटरी नहीं है, आप बाहर से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। बट यदि कार जो मैन्युफैक्चरर या जो डीलर हो गया, यानी टायर आप मेरे से मत लो, या आप कहे टायर मैं आपसे नहीं लूंगा, टायर मैं किसी और से लूंगा, तो कार वाला मानेगा? सो नाउ यू हैव टू सी आपकी जो दोनों प्रोडक्ट है कितने एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है, क्या उसको अलग किया जा सकता है सेपरेट या नहीं किया जा सकता है? यदि किया जा सकता है और लोगों को एक्सक्लूसिविटी आपको उसी चीज में दे, यदि आप दे पा रहे हो तो देन इट मेक सेंस। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं इसके बिना एक के बिना दूसरा चल ही नहीं सकता है, तो आपको वो पैकेज ही आपको ऑफर करना चाहिए। मैंने सर ये एक्सपीरियंस किया है एक दो कस्टमर के साथ कि मान के चलो उनको कंबाइंड नहीं चाहिए था, पार्ट चाहिए था, मान लो अकेला सिस्टम चाहिए था, उनको ट्रेनिंग नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे मान लो क्लैरिटी ले रहा हूँ कि मुझे अलग करना चाहिए उन चीजों को। बिल्कुल, यदि मैंने वही कहा ना कि यदि उनका आपस में डिपेंडेंसी नहीं है, यदि आपस में डिपेंडेंसी नहीं है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो। जैसे मैं अब अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं आपको हाई टिकट कोचिंग पूरा सिखाता हूँ, राइट, हाई टिकट सेल सिखाता हूँ, उसमें मैं आपको पूरा ऑर्गेनिक भी सिखाऊंगा, आपको चैटिंग सिखाऊंगा, कमेंटिंग सिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब आप बोले नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ मुझे सेल्स सिखा दो, ठीक है, मैं कहूंगा सेल्स तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन आप लीड कहाँ से लेके आओगे फिर? सेल्स किसको करोगे? तो माई प्रोडक्ट इज नॉट अलाउिंग मी टू बाइफर्केट माई प्रोडक्ट इनटू मल्टीपल डिफरेंट पीसेस। वो सब एक दूसरे से लिंक्ड है, तब जाके आपका एंड रिजल्ट मिलता है। आपके प्रोडक्ट में यदि दोनों सेपरेट हो सकता है तो आप उसको कर सकते हो, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मेरे केस में वो चीज नहीं है, राइट। अब जैसे एक और एग्जांपल दो, मान लीजिए कि कोई डिजाइनर है, वो कहता है कि मैं सिर्फ रेड कलर का ही डिजाइन करूंगा, राइट, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगा फिर आपको कि यार डिजाइन में सिर्फ रेड कलर ही क्यों? यार ठीक है सेकेंड जी, वी आर रैपिंग इट अप, टेक केयर, सी यू, ऑल द Thank you, sir. बेस्ट। Thank you. Bye bye. Bye bye. तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि व्हेन यू हैव अ चॉइस टू सेपरेट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉट इंटरलिंक्ड, एक्चुअली बस वो देखना आपको इंटरलिंक्ड है कि नहीं। यदि इंटरलिंक्ड नहीं है तो यू कैन गिव ना, नहीं तो फिर वो क्या होगा, आपकी सेल फिर कम हो जाएगी। अब वो सोचेगा यार मुझे तो चाहिए नहीं था, जबरदस्ती मुझे ये लेना पड़ रहा है, सो दैट विल क्रिएट अ रेजिस्टेंस टू देयर डिसीजंस। उनको आप सेपरेट कर दो, यदि आपने सेपरेट करने का ऑप्शन है तो दैट्स इट। ठीक है सर, समझ गया आपकी बात में, थैंक यू। वेलकम। एनीथिंग एल्स? I'm trying to bring more and more topics like this. मैं बहुत सोच सोच के टॉपिक एक एक करके निकाल के ला रहा हूँ, so that I can give you more and more value, and this is what my effort is. बाकी now what I'm going to do is, so today is the first Saturday of this month. मैं 2 या 3 every Saturday तो मैं ही कर रहा हूँ, एक सैटरडे साथ इस बार मैं ट्रैवल करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, and end of the month I'm going to do a master training. मतलब अभी जो छोटा मैं करता हूँ 20-25 मिनट का ना, वो एटलीस्ट 1 घंटे का रहेगा। तो दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू एवरी सैटरडे, स्मॉलर ट्रेनिंग्स, एंड एंड ऑफ द मंथ अ बिगर ट्रेनिंग और अ मास्टर क्लास, अगेन रिलेटेड टू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, व्हाट वी आर डूइंग। तो बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अभी ब्रेनस्टॉर्म करा है, निकाला है, और उसके छोटे छोटे टॉपिक्स निकाल के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो आई डेफिनेटली नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट कि आप आइए, ज्वाइन कीजिए, देखिए, सीखिए। फिलहाल तो यही है, right? And definitely I'm also working on few things which are going to help you even better in terms of creating and promoting and growing your business. तो कुछ चीजें अभी काम चल रही है, that definitely I'll be announcing. But एक चीज बताइए कि if I do a master class for 99 or 199, would you be able to pay that money to join that master class? ट्रेनिंग पे नहीं, trainings are all free. जो मैं मंथ एंड पे करने का सोच रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, अभी मैं सोच रहा हूँ कि is it okay to charge 99 or 199 for this kind of a master class which I do, which I'll be doing? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, ठीक। Actually, it is only for serious people. 99, 199 से कुछ होने वाला नहीं है, but it is only to qualify people who are really serious to come and definitely learn something out of this and implement in their business, right? Chaliye, that is what I was willing to do. Thank you so much for your valuable time. I hope I have made sense. And I'm looking forward to more trainings like this in future. थैंक यू सो मच सर, इतना वैल्यूएबल सेशन देने के लिए। Welcome, welcome. Thank you, Mithu. Thank you, Ronak. We'll meet again next Saturday. Yeah. Bye-bye.